One line, sir. Academic and industry experts. Now will it be is time for consulted. question The hour. government should Rest of also the special increase mention funding will of be taken up institutions, before the educational House institutions adjourns. It is time for to question. hire and retain the best. Time for question. Thanks for all members who cooperated today. Let us function like this every day. It's very heartening. Thank you very much. It's a good day today. Question number 76. No, this For is, question numbers 79 and 81, Please. there is no English version. We are unable to put supplementary questions. This is very serious matter how according to could me. this happen? All questions are in two languages. Chairman, you must. I will look into this. I will look into this. His point is right. Yeah. There is no English translation. No, all questions have to be in two This is not languages. fair. Answers have to be in two We languages. must be protected by your by your Thank you very much. Thank you very much for pointing this out. Shri thank you. Tapan Kumar Sen, yes, question 76. Let it be answered. A statement is laid on the table of the House. Supplementary, please. At the outset, I like to thank the Honourable Minister for giving a very detailed reply. Now, sir, my first supplementary is that in the matter of delayed project, you have pointed out two issues. One of them is deed for joint undertaking. My submission to Honourable Minister, whether you are going to reconsider the whole process, because this provision of deed of undertaking to be insisted on the power plant manufacturer, despite their competence to provide technology and equipment, and they have purchased technology at a cost. Even after that, if you insist for the deed of joint undertaking, it means that business stands shared with the agency with whom they have to submit a deed of joint undertaking for responding to your the power project construction. So our own domestic company are losing business, although they are purchasing through they are paying through their nose for purchasing the technology. So I think both the concerned minister is here. I am referring to case of BHEL. Thank you. So will you please seriously consider that aspect without definitely compromising the quality of your construction? Thank you. Thank you. The honourable member is a very senior member, and I must thank him for highlighting an issue which has been agitating on the other side. Many honourable members in this House, including certain members from Bihar, who have been again and again coming to me and raising the issue of long delays in the past in getting spares and technology. Sir, through you I would like to inform the honourable House that why we insist on this deed of joint undertaking is because in the past the experience has been that foreign companies give the technology, but at some latest date in time, when they are required to give spares, when they are required to give supplementary technology, when they are required to modernize that equipment, at that time they try to charge an arm and a leg and extremely exorbitant prices, because at that time we have no legal binding operating document on them, because of which we can get the spares at a good price, get the technology at a good price. So I think it's a good practice to hold the equipment supplier or technology supplier responsible jointly and severally along with the domestic manufacturer, so that there's some skin in the game also of the international technology provider. Second. Sir, my second supplementary, before that, I'd like to just respond very briefly that though the problem you have pointed out in justifying the deed of joint undertaking, that can be addressed in a different manner. As a purchaser, my purchase agreement of technology with those, or spares of the technology with those foreign suppliers, that purchase agreement can take care of that. But for to qualify as a bidder for that particular project, this should not be made a condition, because that forces the company to share the business, share the revenue to the, and for a public sector company, if they share it, it is to the loss of national exchequer as well. And my second supplementary, sir, in view of, you will definitely agree with the everyday rising requirement of power in our country, in an expanding economy, it is noted that there are cases where bidding was done
The lowest bidder was identified, but still there is a time lag. This will not reflect in your delay statement. Because unless you award the order, that is not, the time clock does not start. So there are cases that particularly in Power Ministry, with two with NTPC and one with this NHPC and J&K government joint undertaking, the L1 was, bidding process was that L1 identified, but still award is not flowing. You know that once the award is contracted, then giving that, there is a period, at least 2.5 years period, when ultimately the plant can be commissioned, and there are different other factors. So to quicken up this process, will you please consider these three cases in Pudi Madaka thermal power plant by NTPC, in Barathi thermal power plant by NTPC, and 1000 megawatt Padakul hydroelectric plant by CVVPL, a joint venture of NHPC and J&K government. L1 is finalized, order is not being placed. Will you please expedite? I think this is in the interest of the nation. Thank you. Thank you, Tapanda. I'd like to inform the honorable members through you, sir, that as regards your first supplementary to the supplementary, it could be taken care of by the purchase agreement, but by that time the bidding would be over, and that would be tantamount to a post-tender requirement to have a separate clause in the purchase agreement. It's not allowed by law. I have to give upfront what are the requirements of all the tenders, and therefore the joint undertaking is decided upfront itself. I believe that's the right way to ensure compliance and safer way to get the foreign bidder or consortium partner. Otherwise, sir, we have seen in the past, and I think everybody, there are many senior members who've been very senior ministers, are aware that just to get a bid, very often agreements are made with foreign companies only for namesake, to either get their net worth or their technology. And after the bid is won, the foreign fellow goes away, the domestic fellow gets the order, but is never able to provide good quality and good equipment to for the people of India, or serving the people of India. Therefore, sir, I would humbly submit that it's the right procedure to have them jointly responsible if they are bidding jointly. So the second question is very interesting, and I'll take that opportunity to inform the honorable members once again, sir, that today India has surplus power across the length and breadth of the country. The only constraint in two regions, the northeast and Karnataka, the southern region, is because of transmission ability, which also in the last 18 months, I'm sure members from the south will appreciate how much electricity has increased in your states. Today, Tamil Nadu, Kerala, Telangana, Andhra Pradesh, which were perennially short of power, all have surplus power, save and except the unfortunate floods in Chennai right now. But in fact, Tamil Nadu has so much power, sir, that they are not able to consume the amount of power they have available for Tamil Nadu. Karnataka is the only state, sir, where there is a problem today because the rain gods have not been kind. We have not had enough hydropower generation, and transmission lines are not something that we can create in 1 or 2 years. In fact, the bidding process alone was 2 years long before I became minister. However, since he spoke about the cases where L1 bids have already happened, each of those three cases, there are very cogent reasons. I have such a detailed response to that question. I can share it either bilaterally. I think so. But if the whole house is interested, I have, for each of the three projects, what is the reason where it got delayed? I mean, for example, one of them... Please make it available to the honorable member. Okay, I'll make it available to him. But I would like to urge the honorable house to prevail upon your states to buy more power and serve their people with 24/7 power. Thank you, There's thank you. enough and more available. Dr. Mungekar, please, no further discussion. You've had a question and 2 supplementaries. Please. No, Mr. Tapan Sen. And the industrial consumption by power, that is also a factor. Can you go through that aspect also? Dr. Mungekar. About that, we are having some... Please. Thank you, sir. Honorable Minister's statement that we are having surplus power. This is a statement at a point of time. And taking into account Marshall's statement, it is subject to other things remaining the same.
In a dynamic economy, nothing is surplus. Now, while analyzing the 24 projects which have been taken during the last 5 years, 2 belong to 2011, 7 belong to 2012, and 9 belong to 2013. And the answers given are absolutely a stereotype. It is absolutely, sir, unreasonable to become complacent about the stock and the supply of the power generation. The answers are routine. According to me, some drastic actions need to be taken, and if he is considering that the power is surplus and that is the reason for becoming complacent, I think that is unacceptable. We should think out of the box and make power more and more so that at any given point in time, we shall be having surplus power. What's Thank you the very much. question? Question is, at what actions you'll be taking to ensure that at any given point of time, not only today, at Thank any you. given point of time, we shall be having surplus powers. Sir, Mr. Mungekar is a very eminent economist and he's used some very nice terms at surplus power at a point of time. But I would like to humbly submit that I'm not exactly a stupid person who doesn't understand the basic elementary economic theory that you have to talk of surplus power in the context of a growing economy, in the context of 300 million people Please. left without power 68 years after independence. We obviously do modeling. Okay. We obviously calculate what is the requirement of power going forward. But I'd like to inform the honorable members why I say India is surplus in power. In the last 18 months, we have added 33,000 megawatt of power generating capacity. But we don't have enough demand. States are not picking up that Thank power. you. We are not able to sell. Sir, may I complete, sir? Please, we are In a- taking too much time on one question. Sir, power is a very sensitive subject. Honorable members like to know more about it. Sir, there is 100,000 megawatt, 1 lakh megawatt of thermal capacity which is under construction all across the country, which itself will add 600 billion units of power for the country. We are setting up 1,75,000 renewable, which will add about 240 billion units more of electricity. Please. UMPPs are proposed to be given out. So I am saying the plans that this government has, and we sir think very much out of the box. Thank you. Not to allot projects without process, but to do everything very honestly and transparently. Piyush Goyal ji, Honorable Minister, please, 1 minute. Honorable Minister, the chair's request is that the answers should be short so that we can cover more ground. Shri Basuraj Patil. सभाध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कर्नाटक में हम अपेक्षा की पूर्ति करने में असफल है। अभी जो कर्नाटक का सबसे बड़ा 2400 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट सरकार के अधीन में है, उसके बारे में कब पूरा होगा, क्या इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं? और सबसे बड़ा जो उत्तर कर्नाटक में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का जो प्रॉब्लम होता है, उसको कैटर करने के पूर्ति करने के दृष्टि से क्या अभी जमीन वगैरह सरकार लिया है, अभी कुछ नए काम शुरू करना है, इसके बारे में भी मैं जानकारी चाहते हुए कर्नाटक की आवश्यकताएं कब पूर्ति की जाएगी और कुर्गी का ये प्रोजेक्ट कब खत्म होगा, इसके बारे में मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूं। धन्यवाद बसवराज जी। जहाँ तक कर्नाटक का विषय है, मैं एक बार पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको और स्पष्ट करूंगा कि केंद्र सरकार की तरफ से पूर्ति करने में कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार से जितनी पूर्ति करनी है कर्नाटक को, वो पूरी मात्रा में 100% पूर्ति की जा रही है। जो कमी पड़ी है वो स्टेट के अंदर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसको पानी लगता है और इस वर्ष वर्षा कम होने के कारण पानी संभवतः कम रहा है, तो हाइड्रो पावर लोकल स्टेट की कमी हुई है। केंद्र सरकार से पूर्ति में कोई कमी नहीं है। Shri Rajiv Shukla. No, please. No supplementaries to supplementaries. Sir, his question was different. Rahman Saab, no supplementaries to supplementaries. Sir, half his question remained unanswered. Sir, the Kudgi power project, by the way, there was an earlier reference by the other member कि 2011 से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 12-13, हमारी सरकार तब नहीं थी, वो डिले क्यों देर लगी उसकी जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन कुडगी जो कर्नाटक में 3x800 मेगावाट का प्रोजेक्ट लग रहा है, ये 2017 तक लग जाएगा। इसका यूनिट नंबर 1 का टीजी बॉक्स
अप्रैल 15 में हो चुका है। कंस्ट्रक्शन तेजी से चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है इस समय सीमा में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। Thank you, Shri Rajiv Shukla. मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि एनटीपीसी के तमाम प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, लेकिन कई राज्य सरकारें हैं जिन्होंने एनटीपीसी से तमाम बिजली ली और उसका बहुत बकाया है। तो कितना बकाया राज्य सरकारों पर है एनटीपीसी या भारत सरकार का, और कौन राज्य जिनका सबसे ज़्यादा बकाया है, ये मैं जानना चाहता हूँ। Thank you. सदस्य ने एनटीपीसी के बकाया का विषय उठाया। एनटीपीसी के बकाया का विषय 2001-2 तक बहुत गंभीर होता था। पूर्व में मेरे मित्र और सहयोगी सुरेश प्रभु जी जब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री थे, तब एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट किया गया सभी राज्यों के साथ और सभी सीपीएसयू, पावर और कोल की सीपीएसयूज के साथ, जिसके मद्देनजर आज के दिन एनटीपीसी के कोई ऐसे बकाया की गंभीर स्थिति कोई भी राज्य के साथ नहीं है। कभी कभार कोई छोटे राज्य को या कोई पूर्वी उत्तर के या जम्मू कश्मीर में थोड़ी देर विलंब हो जाती है, पर ऐसी आज कोई परिस्थिति नहीं है जो अर्थ शैटरिंग हो। और ऐसी कभी परिस्थिति होती है तो हम बातचीत करके कुछ समय सीमा तय करके लोगों से पैसा पूरा कर लेते हैं। Thank you. Question 77. Question 77. Statement is laid on the table of the House. सर, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न था कि कितने लोग लाभान्वित हुए हैं। उसके उत्तर में उन्होंने कहा है कि नवंबर 2015 में 40 ब्लॉकों के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं। मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है उसके अनुसार इस योजना के अंतर्गत ब्लॉक लेवल पर उद्योगों का सपोर्टिंग सिस्टम विकसित करने के लिए ब्लॉक रिसोर्स सेंटर और एंटरप्राइज प्रमोशन स्कीम की भी व्यवस्था की गई है। इन 40 ब्लॉक में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए इस प्रकार के उद्योगों का जो सपोर्ट सिस्टम विकसित किया जाना है वह कितने ब्लॉकों में किया गया है, ताकि योजना का लाभ नीचे तक सब लोगों को पहुंचे। सभापति जी, 2014 जुलाई के बजट सेशन में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये विलेज एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम की घोषणा की थी, और उसके मद्देनज़र ये एक सब स्कीम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की, और इसमें जो हमारे मंत्रालय की कमेटी है, वित्तीय कमेटी, उसने फरवरी 2015 में इस को आगे चलने के लिए अप्रूवल दी और जून 2015 में हमने गाइडलाइंस दी। तो जो माननीय सदस्य ने कहा है कि ये स्कीम नवंबर 2015 में शुरू हुई है और इसको हमने राज्य सरकारों से उनकी इच्छा जाहिर करने के लिए कहा, तो 17 राज्यों ने अपनी संतुति भेजी और उसमें से 14 को हमने ठीक पाया और 14 राज्यों को 40 ब्लॉक हमने दिए हैं। और मैंने जैसे कहा कि अभी लाभार्थी तो तब होंगे जब स्कीम चालू होगी, तो अभी तो इस योजना का क्रियान्वयन शुरू हुआ है और जैसे मैंने कहा 14 राज्यों में 40 ब्लॉक में इसकी शुरुआत की गई है। दूसरा प्रश्न। सर, माननीय मंत्री महोदय जी ने बताया है कि अभी स्कीम लागू होगी, तो क्या इस स्कीम को चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, तो ग्रामीण आजीविका को आगे बढ़ाने की दृष्टि से जो स्किल डेवलपमेंट है, मुद्रा बैंक है, एनआरएलएम कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जो हैं, उनको सबको कोऑर्डिनेशन करके इस स्कीम के अंतर्गत लाना और विभिन्न एजेंसियों को साथ ला करके ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना, इसके लिए भी कोई कार्य योजना सरकार ने तैयार करी है। और इसके लिए जो स्टडीज की जो बात इन्होंने अपने इसमें जवाब में कही है, क्या इस प्रकार की जो स्टडीज इन ब्लॉक्स में की गई है वो सार्वजनिक रूप से वेबसाइट में कहीं मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की जाएंगी?
ये जैसे मैंने कहा कि ये एक सब स्कीम है एनआरएलएम की, और ये 484 करोड़ रुपए की लागत से 4 साल के लिए ये स्कीम बनी है, और इसमें 1,82,000 एंटरप्रेन्योर को तैयार किया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि जो आपने कहा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, ये पहले भी हमने इसके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि वहाँ जो गांव हमने जो बेसलाइन सर्वे किया करवाया राज्य सरकारों से, उसमें भी ये कहा गया था कि अगर राज्य सरकार ये चुने कि किस इलाके में, किस क्षेत्र में, किस गांव में कौन से एंटरप्रेन्योर की संभावना है जिससे कि वो अपना काम तेजी से चला सके, और इसके मद्देनजर हम एक ब्लॉक में 2400 एंटरप्रेन्योर तैयार करेंगे, और उनको उनकी आजीविका ही नहीं बल्कि ये देखेंगे कि उनकी जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें उनको कोई आगे बढ़ने का स्कोप है या नहीं है। तो उसी के आधार पे बेसलाइन सर्वे कंडक्ट किया गया, और 6 महीने तक अगर इस स्कीम के माध्यम से कोई एंटरप्रेन्योर आगे आता है तो उसको हम सस्टेनेबिलिटी के लिए भी उसकी वित्तीय सहायता करेंगे, और एक एंटरप्रेन्योर पे 10,000 रुपया खर्च करने का हमारा अनुमान है कि एक एंटरप्रेन्योर पे 10,000 रुपया हम खर्च करेंगे। थैंक यू। श्रीमती विप्लव ठाकुर। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि इन्होंने कहा कि 480 करोड़ रुपया इन्होंने रखा है, तो जो ये 17 स्टेट्स है या ये मनी पैसे का किस तरह से विभाजन करेंगे स्टेट्स में। दूसरा मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर एंटरप्रेन्योर कोई अपनी काम शुरू करता है, उसकी मार्केटिंग के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि गांव में लोग जो है काम तो बेचारे शुरू, बड़ी स्कीमें आई हैं वो शुरू कर लेते हैं लेकिन मार्केटिंग नहीं मिलती, जिससे उनका जो लिया हुआ लोन भी उनके सिर के ऊपर जो है भार बन जाता है। तो इसके लिए क्या सरकार करने जा रही है, मार्केटिंग का क्या इसमें उन्होंने प्रावधान रखा। थैंक यू। माननीय सदस्य ने ठीक पूछा सभापति महोदय। इसमें पहला जो किसी को सेलेक्ट करने का एक क्राइटेरिया है उसमें यह है कि ट्रेनिंग द एंटरप्रेन्योर इन चूजिंग द राइट एंटरप्राइज टू स्टार्ट एंड हाउ टू रन इट। एक तो इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, और जैसे मैंने कहा बेसलाइन सर्वे में ये भी निश्चित करना है कि उस क्षेत्र में जिस एंटरप्रेन्योर को हम मदद कर रहे हैं वो आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता। दूसरा, मैंने जैसे कहा कि उसको 6 महीने तक support the entrepreneur for first 6 months of its business to ensure sustainability of the enterprise। और उसमें सभापति महोदय, उसमें जो खास बात हमने रखी है उसमें ये भी रखी है कि जहां उसको हम प्रिलिमिनरी स्टेज पे सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन का प्रावधान कराएंगे, उसके बाद उसको बैंक से जोड़ने का भी, ताकि वो बड़े लोन की तरफ जब जाएगा तो उसका 10,000 या 20,000 का लोन नहीं, जो बड़े लोन की तरफ जाएगा उसमें हम उससे बैंक से जोड़ने का भी, जो हमने ये नियुक्त किए हैं PIA, इनके माध्यम से उसको बैंक से जोड़ने का भी कार्यक्रम है। और मुद्रा जो हमारी योजना है उससे भी हम उसको जोड़ेंगे ताकि उसको पैसे की दिक्कत नहीं आए अपने। थैंक यू। श्री नारायण लाल पंचारिया। थैंक यू। नो, थैंक यू। जस्ट एक पंचायत जी 1 मिनट, आप इसका जवाब दे दीजिए। मार्केटिंग का मैंने इसीलिए तो आपको कहा कि बेसलाइन सर्वे का मतलब ही ये है कि वहां जो एंटरप्रेन्योर होएगा, वो जो कोई काम शुरू करेगा, उसका वहां कोई ऐसे चांसेस हैं कि उसको मार्केट मिले। अगर मार्केट ही नहीं मिलेगी तो वो अपना बिजनेस बढ़ाएगा कैसे। तो इसीलिए जो प्रावधान है वो इसीलिए है कि उस इलाके की सर्वे की जाएगी
ताकि उसके मार्केटिंग की सुविधा भी उसको हो। Thank you, Narayan Lal ji. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से ये जानना चाहूंगा कि जिन 14 राज्यों में एसवीईपी शुरू करने की स्वीकृति विभाग द्वारा दी गई है, क्या उसमें राजस्थान राज्य भी शामिल है? यदि हाँ, तो राजस्थान से कितने ब्लॉकों के संबंध में प्रस्ताव विभाग के पास प्राप्त हुए हैं? ये 14 राज्य, जैसे मैंने कहा कि 17 राज्यों ने अपनी इच्छा प्रकट की थी, उसमें से 14 राज्यों ने अपने प्रस्ताव भेजे हैं और उसमें राजस्थान से अजमेर डिस्ट्रिक्ट से केकड़ी और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से बेगम, ये 2 ब्लॉक हैं जिनमें ये कार्य शुरू किया गया है। Thank you, Shri Rapula. Before taking over of this government, Question, for the please. last 10 years, 14 crore people from the poverty have been alleviated through National Rural Employment Guarantee Program, besides National Rural Livelihood Mission. National Rural Livelihood Mission is intended to have and attain the ideals of Mahatma Gandhi Question, and to please. empower No lecture. rural. Just Yes. ask question. To empower the rural enterprise. With this backdrop, I would like to know from the minister, respected chairman, while having Khadi Village Industries Commission, Khair Board, Jute Board, and some other in the Ministry of Medium, Small, Micro Enterprises and Ministry of Textiles and several ministries which are looking after the welfare sector, they are having several programs to look after the enterprise of the downtrodden, weaker of the rural as well as urban. But this startup village enterprise program is a piecemeal scattered effort without having the intention to cater to the needs of total rural India. Whether Ministry of Rural Development is intending to coordinate comprehensively to rope in Khadi Village Industries Commission, Thank you. which is the authorized agency to look after the rural enterprise and to improve the lot of the rural enterprise Please. with the proper support of the No, banking. Mr. Apollo, please. You cannot Thank you, ask sir. an open-ended Yeah, question. with the proper support of the You banking. cannot ask an open-ended question. It has to relate to the question, Exactly, main question sir. and the answer given. Exactly, sir. Rural Development Ministry has just identified 40 blocks. After Thank you. achieving so much wide rural Thank you. enterprise Okay. with the All Khadi right. Village Industries Commission, Thank you. still this is the Thank piecemeal you. effort by this present government. That's what, and whether they are intending to Please, support through now banks. sit down. Let the Thank you, question sir. be answered. Sir, you have rightly said that rural development is a vast subject. 68% of our population is still living in the rural areas. But what I have said is National Rural Livelihood Mission is one of the component of the entire Rural Development Ministry program. And this startup entrepreneurship is one of the smallest. So, but still you want to know what we are doing under National Rural Livelihood Mission. Sir, we have already taking up promotion of institution of the poor by constituting self-help group, then revolving fund and the community investment support fund. This is also very important program, and interest subvention, that wherever the SHG are working efficiently, they are to give only 4% of the interest, rest of the interest is subvented. And sir, Thank you. GKY is another program which has been launched where the employment or the job to the trainee is assured up to 75%. If 100 trainees are there, 75% would be assured of the job. Thank you. That is one. Mahila Kisan Shashaktikiran Pariyojana is also one of the programs.
So there are a lot of programs which you have started. Thank you. Question 78. Who? The minister, कौन है? सर, Who's the आपकी minister? अनुमति से मैं माननीय पर्यावरण मंत्री ठीक है. से Minister. Who's the minister? सर Yes. क्वेश्चन नंबर 78 Yes, Mr. Rajya. Please answer the question. सर आपकी अनुमति से एक मिनट. You have बोल दिया. चलिए. Yes. Continue. सर, मैं माननीय पर्यावरण मंत्री से पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। सर, ई वेस्ट पॉल्यूशन जो है, इसके विषय में सरकार ने कुछ रेगुलेशन भी बनाए हैं, लेकिन इसके अनुपालन में पारदर्शिता का अभाव है, जिसके कारण ई वेस्ट प्रोड्यूसर्स को एडवांटेज मिलता है और पर्यावरण में ऐसे पोल्यूटेंट बढ़ रहे हैं जिनसे जन स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। सर, सरकार ने बोला है कि 151 जो संस्थान हैं, उत्पादक हैं, वो पंजीकृत हो चुके हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 12,138 टन का रिसाइकिल करते हैं। सर, उसके बावजूद भी एक टॉक्सिक लिंक एजेंसी है, उसने सर्वे करके बताया है कि 18 उत्पादक आज भी ऐसे आइडेंटिफाइड हैं कि जो कोई प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। सर, ये बड़ी चिंता का विषय है। सर, मैं आपके माध्यम से आपके संरक्षण में आकर के सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार इस चीज़ का संज्ञान लेकर के उसकी ट्रांसपेरेंसी इस्टेब्लिश करने के लिए कोई मैकेनिज्म या कोई आयोग खड़ा करना चाहती है कि नहीं खड़ा करना चाहती है? Thank you. सर, माननीय सदस्य जी ने बहुत ही सही तरीके से अपने बात को रखा है और क्वेश्चन के हिसाब से एक ही स्पेसिफिक चीज़ पूछा है। समस्याओं का तो उन्होंने भी जिक्र किया, जिसको मैं लंबा से अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। जो एक संस्था है टॉक्सिक लिंक्स, जिन्होंने एक स्टडी किया है जिसको टाइम टू रिपोर्ट 2 करके उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया है। उस रिपोर्ट में जितना भी उन्होंने समस्याएं का जिक्र किया और कुछ एस्टिमेट लगाया, उसको सर 2015 का जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स नया सरकार ने जो बनाया है, अब ड्राफ्ट तैयार है और ऑनलाइन है, वो पारदर्शिता है और सब जाकर के उसको आराम से देख सकता है। तो उसमें जो कंसर्न रेज किया गया है वो सारा उसमें इंक्लूडेड है। मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूँ कि मेन जो कंसर्न है, कलेक्शन सिस्टम ऑफ ई वेस्ट, चैनलाइजिंग ऑफ ई वेस्ट, फाइनेंसिंग द सिस्टम, public awareness about e-waste and disposal prescribed, taking authorization and filing returns। ये जो 7 पॉइंट का जिक्र किया वो हमने ऑलरेडी जो अपना ड्राफ्ट रूल्स है उसमें शामिल किया गया है। थैंक यू। दूसरा प्रश्न। एक चीज़ और साथ में पैदा हो रही है सर, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी बढ़ रहा है और ई वेस्ट जो है उसका क्वांटम हर साल बढ़ता जा रहा है। सर, मेरा मानना है कि क्या सरकार जो है पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स, जो इससे रिलेटेड पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, उसको एड्रेस करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ में मिलकर के कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रही है कि नहीं बनाने जा रही? सर, वो तो कोई भी मंत्रालय इससे जो लिंक है उनसे तो मिलकर के काम करना ही है। और सर, क्योंकि ये बहुत ही अपना जो लाइफ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए हमको सरकार जो संवेदनशील होना ही पड़ेगा, इसलिए हेल्थ मिनिस्ट्री से तो बहुत ही इसका डायरेक्ट लिंक होता है। तो उसके लिए सर डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बहुत स्ट्रिंजेंट किया गया है। जो नया रूल के मुताबिक कोई भी जो ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम प्रोड्यूस करता है उसको वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उसके ऊपर में, वो बच नहीं सकते हैं। तो बहुत प्रावधान जो है, बहुत इसमें कठोर प्रावधान रखा गया है। इससे माननीय सदस्य का जो कंसर्न है वो एड्रेस हो जाएगा। थैंक यू। श्री शरद यादव। सर, दुनिया की औद्योगिक सबसे बड़ी औद्योगिक विध्वंस हुआ था भोपाल में। लोग बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी तादाद में किसी इंडस्ट्री का विध्वंस वाला घटना नहीं हुआ। आज भी वहाँ लगभग 64 एकड़ इलाका है, लोग वहीं बसे हुए, वहीं खेती कर रहे हैं, उसी का पानी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी नहीं हैं, भारत सरकार आज तक इस सवाल को और इसका समाधान कैसे निकालेगी, ये आज तक भी साफ नहीं है।
मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये सवाल आपके संज्ञान में ला रहा हूं, इसको व्यापक तौर पर सरकार को पूरी गहराई से इस मामले को गहराई से जाकर के इसका क्या समाधान होगा, ये जरूर आपको बताना चाहिए। अभी बता सकते तो बहुत बेहतर होगा। चेयरमैन सर, ये माननीय सदस्य जी शरद यादव जी ने जो कहा है वो एक सजेशन के तौर पर कहा है, और मुद्दा उन्होंने बड़ा मुद्दा जो उठाया है, स्पेसिफिक एक सजेशन है। उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है, इसमें कोई भी जो प्रोड्यूसर है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कोई वो इलेक्ट्रिकल आइटम्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता हो, या कोई भी जो केमिकल्स या कोई भी जो हैजर्डस है, जो शरीर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है, उसके लिए अभी कोई बच नहीं सकते। इसलिए जो वाइकेरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रावधान रखा है वो इसीलिए रखा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा का पूरा उसको लेना ही पड़ेगा। इसके प्रक्रिया में तो जो ड्राफ्ट रूल बनाया है उसमें पूरा जिक्र किया गया है। थैंक यू श्री अविनाश राय खन्ना। धन्यवाद सर। जिस ढंग से माननीय मंत्री जी ने और सदस्यों ने बताया है कि ये एक बहुत गंभीर समस्या है। ये भी देखने में आया है कि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़, कुछ एनजीओ के द्वारा वहाँ का इलेक्ट्रॉनिक सामान जो एक्सपायर होने वाला होता है वो यहाँ पर भेजने की कोशिश करते हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि पिछले 3 साल में कितना बजट एलोकेशन हुआ है और कितना हमने ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कितने टन या कितने क्वांटिटी में उसको हमने कम करने की कोशिश की है, ये मैं जानना चाहता हूँ। अब ये सर, ये जो स्पेसिफिक उन्होंने जो फिगर पूछा है, वेस्टर्न वर्ल्ड का जो कंसेप्ट और हमारा कंसेप्ट में अंतर है। हमारा यहाँ, क्योंकि एक स्टडी रिपोर्ट सर मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जो यूएन यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट जारी किया है, उससे कहते हैं कि हिंदुस्तान में टोटल 1.7 मिलियन टन्स का ई वेस्ट यहाँ जनरेट होता है। लेकिन उसमें हम सहमत इसलिए नहीं हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी सामान का जो एक लाइफ होता है उसके बाद भी हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। हमारा यहाँ में रिपेयर होना, फिर उसको लाइफ एक्सटेंशन करके उसका और भी हम लोग दोबारा रिसाइकल करने का कंसेप्ट रहा है। इसलिए जो वेस्टर्न स्टडी के मुताबिक जो इतना बड़ा जो एक क्वांटम दिखाए 1.7 मिलियन टन्स, वो उससे हम एग्री नहीं करता है। उसके बदले में हमने अपना जो स्टडी किया है हिंदुस्तान के जो वेरियस एजेंसीज है, उसके मुताबिक जो सर ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो स्टडी किया है, उसका मुताबिक 2009 में 4.34 लाख मेट्रिक टन्स जो है यहाँ कंबाइंड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ई वेस्ट जनरेट हुआ है। ये हमारा स्टडी है। और जो बाहर से आने का जो माननीय सदस्य ने जिक्र किया, उसका तो हमने जो अभी एक इन्वेंटराइजेशन जो प्रोसेस शुरू किया है, उसमें पता चल जाएगा कि बाहर से आने वाला और हमारा यहाँ प्रोड्यूस होके कितना जो है ई वेस्ट जनरेट हुआ है, वो कंबाइंड जो है वो भी पता लग जाएगा। जो नया हमने प्रोसेस शुरू किया है, इससे सुविधा मिलेगा। श्री विवेक गुप्ता। Sir, the Honorable Minister has written, these toxic materials, if not handled in an environmentally sound manner, may be harmful to human health and environment. Sir, through you, I would like to know, sir, the quantity of mercury or lead or cadmium, each of these items in this per ton of e-waste that is generated or processed, and sir, whether it is harmful at the point of generation or it is harmful at the point of processing. Thank you, sir. Thank you. So any item which is hazardous to the health or the environment will be hazardous at any point of time when it comes into contact to the human being or environment. That is why I have explained earlier also that now it is not only the users but the producers who will have the absolute liability to handle and to manage the e-waste generated by their products. Thank you. Question 79. Questioner not present. Yes. Thank you. Thank you, Chairman, sir. As you know, sir, that this question is related to the drought-prone area and to the farmers especially. Sir, whether the ministry has identified which part of this country, state-wise, which area is drought-prone, whether it has been identified, whether there has been a coordination between the Agriculture Ministry and the Ministry of Renewable Energy. One. Two, sir,
that 50,000 this year, they are going to give 50,000 solar pumps they are going to supply. So, sir, as you know, Chairman, sir, Odisha is all calamities prone, my state of Odisha. And to this time, this year also, we are having a severe drought. Our farmers are facing severe drought. Taking that into consideration, whether this allocations of this 50,000 pumps, solar pumps, will be considered on again cooperative federalism, or it will be not sanctioned beyond cooperative federalism. So I would like to know from you, sir, through you, sir, from the minister, that out of this, the Odisha, how much pump set Odisha is going to get? Thank you, sir. Thank you. The honourable member did refer about the coordination between agriculture and MNRE. I'd like to inform the honourable member, through you, sir, that we allot certain targets to each state depending upon the position of agriculture, the extent of agriculture, and which are the areas which come under stress because of lack of rain periodically or frequently. Therefore, that data is left to the states to decide which is the area in which the pumps have to be encouraged or distributed or supported with subsidy. This data we leave to the states. However, for states such as Odisha, which have been prone to inadequate power in the past, the central government has increased the number of projects that are coming up in that state. In fact, for Odisha alone, the solar pumps that are being given in the current year will be about 5,800. And I am very confident that Odisha will continue to benefit from these pumps and use them in an extensive manner. As regards increasing this, we have drawn up a scheme where the states are encouraged that if they take the annuity model and allow us to finance the pumps, even going beyond subsidy, and go in a much larger way in the state to encourage solar pumps, then without having to invest large amounts of money, our Energy Efficiency Services Limited, ESL, a Government of India undertaking, can finance these pumps, or SECI can finance these pumps, and state government can pay for it over 7 to 10 years. So we are working on that scheme. I'm sure that that will benefit the drought-prone areas significantly. Shri Harivansh. मेरा सवाल बिल्कुल स्पष्ट है, क्या सरकार के पास ऐसे आंकड़े उपलब्ध हैं कि अभी देश में कितने किसान सोलर पंप का प्रयोग कर रहे हैं? इनका राज्यवार आंकड़ा क्या है और इस पे सरकार ने अब तक कितनी सब्सिडी दी है? इससे कितनी बिजली की खपत कम हुई है, डीजल की बचत हुई है और कितनी देश की कंपनियां इसके निर्माण में लगी हैं? धन्यवाद। थैंक यू सर। हम यहाँ से अलॉट करते हैं स्टेट को, और 1 लाख का पूरा आंकड़ा तो मेरे पास है। अगर आप चाहें तो मैं गिन के सुना सकता हूँ या आपको भेज सकता हूँ, लेकिन उसमें डीजल की बचत या उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होना, वो संभवतः मेरे लिए अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि वो स्टेट किस रीजन में देती है और उसकी वजह से कितना या तो डीजल बचता है या जिसके पास था ही नहीं पंप एक नए आदमी को मिलता है, वो तो स्टेट को ही तय करना पड़ता है। हम कोई कंपल्शन नहीं करते हैं कि एग्जिस्टिंग पंप ही रिप्लेस होना चाहिए। अभी तक लगभग 30,000 पंप इंस्टॉल हुए हैं और ये पंप्स के अलग अलग साइज होते हैं, 2 हॉर्स पावर, 3, 5 हॉर्स पावर। तो उससे अगर अनुमान लगाने जाएं तो मेरे ख्याल से जब 1,08,000 जो हमने कुल सैंक्शन किए हैं, 1,08,000 पंप लग जाएंगे तो उसमें संभवतः काफ़ी अच्छी मात्रा में डीजल की कमी होगी। आज लगभग 2 बिलियन लीटर डीजल देश भर में एग्रीकल्चरल पंप्स में लगता है। और मैं कोशिश करूंगा आगे आने वाले दिनों में कि जो मैंने पहले स्कीम बताई एन्युटी मॉडल, अगर सभी राज्य उसमें जुड़ जाएं तो हम इस पूरे को जीरो भी कर सकते हैं। श्री हुसैन दलवाई। What steps have been taken by the government to make this scheme a part of global solar alliance as proposed by the Prime Minister recently? सर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो माननीय प्रधानमंत्री ने 30 नवंबर को हॉलैंड के
अध्यक्ष के साथ लॉन्च किया पेरिस में, उसका उद्देश्य है कि विश्व की जो सौर ऊर्जा बनाने वाले देश हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहते हैं, लगभग 121 देश हैं ऐसे पूरे विश्व में, इनको साथ में जोड़ना और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिसमें टेक्नोलॉजी, फाइनेंसिंग, इनोवेशन, R&D, इस सब में हम एक दूसरे की सहायता कर सके। उसका सोलर पंप से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं, लेकिन ये सम्मानित सदस्य का सुझाव अच्छा है कि हम ये टेक्नोलॉजी फिर जो और पिछड़े देश हैं, कई ऐसे देश हैं जो भारत से भी पीछे हैं विश्व में टेक्नोलॉजी में या प्रगति में, हम ये कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे भी लेके जाएंगे उस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा। Question number 80. Just 1 minute. Let the question be answered first. A statement is laid on the table of the House. Yes, Dr. Subramanian, ready. That the demand is 405 metric tons of coal for thermal power, and the ministry could give 385. It's really commendable and appreciable. You have increased the coal India production, coal production. We are very happy. So now I would like to know, as and today you are almost met the demand of the coal, but in the future, in another 2 years, what is the actually commitment for coal linkage for various thermal power plants, and how we are going to meet? Are you going to meet the domestic, or still you are dependent on some imported coal? Thank you very much. This is an issue which I think all the honorable members will appreciate, that as against the same time last year, many members will recall that in about July, August, September, October period of 2014, we had newspaper headlines screaming that there is no coal in the power plants are going to shut down, very soon we may not have electricity in our homes, in industry. I am very happy to inform the honorable members of the House through you, sir, that as we speak today, the coal stock in the different power plants which are monitored, the larger critical plants, is 26 million tons, which translates to an average of 21 days production, power generation stock. So today, in the entire country, there is only one power plant which does not have more than the critical level of stock. And that is also, sir, because we supplied him as much coal as he was eligible for. In fact, again, 67%. We supplied 79% to that plant. But he consumed it faster. So there is no shortfall of coal supply. The important thing is that over the years, the country had come to a position where we were importing 200 million tons of thermal coal. As I have answered in the question, sir, in the first 6 months, the import of thermal coal has fallen by 13.9% in the first 6 months. This process will continue given the galloping pace at which coal production is increasing. Coal India alone last year added 32 million tons, which was a historical record. This year will add nearly 10% coal to what was produced last year. We are already at a stage where we are at 8.8% growth in Coal India. The last 4-5 months, as all honorable members are aware, are the ones when coal production really picks up. So I'm very happy that coal is no more a problem in the country. The coastal plants will continue to import some amount of coal because it's cheaper, transport logistics is not a problem. So that part, if you leave aside, in the plains, my own estimation is that in about 2 years' time, by 2017, we may not need to import any thermal coal and transport it by train into interiors of India. As regards the commitment, what you asked, in the year 2015-16, the total commitments are 694.25 million tons. And since coal is a regulated supply, you don't supply 100% to each plant. The trigger levels these days are 67%, but we are actually supplying between 75 and 80% to all these, against all these commitments. The power sector, since you are more keen on that, commitment is 550.64 million tons. But my own estimate is that against that, we'll reach nearly 80% supply in the current year. Thank you. Shri VP Singh Badnor. Sir, the minister right now said the galloping pace of coal production.
Now, in the wake of the COP21 at Paris, where we want, and the whole world is talking about how we would stop and not have fossil fuel, conventional thermal energy, and he's talking about the galloping pace. Now, what is the rethinking of the ministry, and will they adhere to what is going to come out from the Paris COP21? Honorable Chairman, the entire country is agitated and very much interested in a successful outcome in Paris. But at the same time, the entire country is very conscious that India is not responsible for the state of the world today, where on a population base, which is twice all of Europe and America put together, India's contribution towards the greenhouse gas emissions is between 2 and 3% only, against more than 50% from United States and Europe. Therefore, the concept of common but differentiated responsibilities was first enunciated by the UPA, which was the right policy, and this government continues to take this very strongly. The Honorable Prime Minister at Paris was the evangelist for all the developing nations' interests and has very strongly put forth the concept that India's requirements to develop its nation, provide power to the 300 million people who probably don't have access also, forget adequate availability of affordable power, has to be protected. Our needs to create jobs, set up new industries are closely linked with getting affordable and enough power. Therefore, coal will continue to remain the base load of India's power requirement. We made that clear to the world, and at the same time, we are conscious of our responsibilities. Therefore, the focus is on research and development. Focus is not to set up inefficient plants, but to set up supercritical efficient plants. Thank you. The focus is to set up 1,75,000 megawatt of renewable energy. But just this morning, when I was getting briefed on the answers, sir, my department pointed out to me that if the government has to set up 1,75,000 of renewable energy, this is energy which comes in a parabolic curve. And when it's at its peak, it will generate that large amount of energy. But as it tapers down, we will need other plants to take over the load to balance the grid frequency. Therefore, I have been explaining to other colleagues from around the world, coal will continue to be the base load of power in India, and therefore we will have to increase the production to meet the aspirations of the teeming millions. Thank you, Shri Rapula. Chairman, as the reply of Honorable Minister records that there is demand and supply gap in the coal, about more than 200 million tons. And he has also stated that the indigenous coal is having very higher ash content and very lower calorific value. Keeping these facts in view, recently the union government has allotted 67 coal blocks to various successful bidders. Whether the 67 coal blocks have been tested with the calorific value and the ash content levels, and whether this allotment of 67 coal blocks are going to reduce the import of coal as he is intending. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sir, I'm glad that the honorable member spoke about the very honest and transparent method by which we have given out these coal blocks through reverse bidding or through auctions, which were there for all the honorable members to see. It was all internet-based, all real-time bidding available for the world. These coal blocks obviously have ash content, and obviously their calorific value is checked by the concerned agency, the CMPDIL. Without that, nobody can even bid for the coal blocks. If you don't have the ability to tell them what is going to be the calorific value of the coal block, no bidder can bid for a coal block. It's a very elementary logical thing you do before you bid it out. Thank you. As these coal blocks come into production, I'm very confident that more and more supplies will increase to power plants and other sectors like aluminium, zinc, all other non-regulated sectors, fertilizer. But I would once again like to put a caveat that import of coal is an OGL item. In the coastal plants, where transporting large quantities of coal, the rail infrastructure will take time to build up.
we may continue to need some imports for some time. Thank you. Question number 81. Questioner not present, let the question be answered. A statement is laid on the table of the House. Thank Shri Mandavia. सर, कुकिंग के लिए एलपीजी गैस या लकड़ी का उपयोग किया जाता है और गांव में लकड़ी और एलपीजी गैस की समस्या रहती है। एलपीजी गैस बाहर से लाना पड़ता है, लेकिन गांव में न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में फैमिली साइज के बायोगैस प्लांट लगा जाए तो फैमिली साइज बायोगैस में उसमें एनिमल डंग्स का उपयोग होगा और ऑर्गेनिक वेस्ट का उपयोग होगा। ऑर्गेनिक वेस्ट और एनिमल डंग्स का उपयोग करते हुए बायोगैस सभी घर में, गांव में, सभी घर में लगाया जाए तो गांव में एनर्जी की खपत कम होगी। कुकिंग एनर्जी के लिए वो सबसे बड़ा उपयोग है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि फैमिली साइज बायोगैस प्लांट स्थापित करने के लिए कुल कितने प्रावधान किए गए हैं, लास्ट 2 ईयर में कितने फैमिली साइज के बायोगैस प्लांट स्थापित किए गए हैं और अगले साल में कितना स्थापित करने की व्यवस्था की। थैंक यू। माननीय सदस्य ने बहुत अहम विषय उठाया। वास्तव में बायोगैस प्लांट्स का ये उपयोग घरेलू तौर पे अगर हम कर सकें तो उसका एक सबसे बड़ा जो लाभ होगा वो लोगों के स्वास्थ्य पे होगा। महिलाओं को जो आज लकड़ी इकट्ठी करके और अपना भोजन बनाना पड़ता है, कुकिंग करनी पड़ती है, ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, जिसके लिए उसको कम करने के लिए मेरे मित्र जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का विभाग देखते हैं, उन्होंने भी एक बहुत सुंदर पहल की है गिव इट अप के माध्यम से कि समृद्ध लोग समाज के अपनी एलपीजी सब्सिडी गिव अप करें और उसी पैसे को लेके गरीबों तक कैसे एलपीजी सिलेंडर्स पहुंचे और गरीबों के घर में भी ये पर्यावरण का प्रभाव कम हो, तो वो एक कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं। बायोगैस प्लांट्स जो हैं ये फैमिली साइज प्लांट्स को भी जो रॉ मटेरियल लगता है उतना रॉ मटेरियल जो काऊ डंग लगता है उतना पर्याप्त मात्रा में एक परिवार के पास नहीं मिलता है। इसके ऊपर काफ़ी इनोवेशन और R&D का काम चल रहा है। फिर भी कुछ प्रोजेक्ट्स लगे हैं गत वर्षों में, लेकिन हमारी अभी तक का अनुमान और अनुभव ये है कि अगर कोई गौशाला हो जहाँ पे 100, 50, 200 गाय भैंस एक साथ हों तो वहाँ पे बायोगैस का प्रयोग ज़्यादा सफल रहता है, फिर उसको पैकेज करके घरों में देना। लेकिन फैमिली साइज प्लांट्स में टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की कमी है। थैंक यू। जहाँ तक उन्होंने आंकड़े मांगे, जो डिसेंट्रलाइज एनर्जी सिस्टम्स हैं, अभी तक 48.28 lakhs डिसेंट्रलाइज बायोगैस सिस्टम्स लगा चुके हैं। थैंक यू। क्वेश्चन 82। बस मेरा ही है। Thank you. Supplementary, please. Sir, in the minister's answer, regarding the stalled national highways project, the assistance will be provided by the National Highways Authority of India on the account of the bank rate plus 2%. Can the minister give a direction that 2% additional burden will be to the stalled projects? Can we avoid that, sir? Chairman sir, the decision was taken by the cabinet and it is implemented. We are getting the bank rate and plus 2 interest because if it is a policy decision, because of that we are following that. It was taken by the cabinet decision, sir. Because of that, we are following. Sir, the stalled already. Supplementary, please. Yes. Second question. Sir, my first question itself, the stalled project already in a financial crisis condition. Why should you add 2% additional burden to them? So the bank rate they can give.
Thank you. So then my second supplementary is, how many projects so far installed condition in the nation, sir? Thank you. 73 projects are installed position. In that, out of 73, 19 projects were reviewed, 39 projects terminated, and 16 projects re-awarded. Question hour over. House is adjourned till 2 p.m.